Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's see what we have lined up for you this week. Girls' school set ablaze in illegally occupied Gilgit-Baltistan. Traditional clay tile art exhibition organized in Srinagar. Construction of new irrigation canals in full swing in Rajarani. Stakeholders consultation conducted under Smart City project. And in our section of Incredible India, we'll take you to witness the Rajarani music festival held in Bhubaneswar. In a shocking incident, a girls' school was set ablaze by some unknown people in the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan. Some believe that this is the work of some radical perpetrators who create trouble for locals on a regular basis. Residents and right group activists are out on streets against the government that has remained negligent against heinous crimes like these. We bring you this report. In what could shake one's conscience, a girls' school was set on fire by some unknown persons in the illegally occupied Gilgit-Baltistan recently. While some believe that these are the same radical perpetrators who create troubles for the locals on a regular basis, others call it a part of a larger sinister design. This wasn't the first occasion when a girls' exclusive institution was targeted. Radicals who oppose any form of empowerment of women have openly advocated their resentment to girls' education. Locals, however, say they are not going to endure it anymore. They will raise their voice against any form of oppression, whether it comes from covert state support or the radicals who have been emboldened by the state's negligence to violence on locals. They say they want justice. ये भारत की बात नहीं है। भारत के सारे लोगों ने, वहाँ के नुमाइंदों ने, वहाँ के वायदीन ने एक करारदाद की शक्ल में इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि स्कूल चलाने वालों को पकड़ा जाए। भारत के लोग भी तालीम चाहते हैं। वो दहशतगर्द नहीं है। यमन के लोग भी तालीम चाहते हैं। ये दहशतगर्द नहीं है। लेकिन जो बीच में हो रहा है, जो दरमियान में हो रहा है, इसका कौन तदारुक करेगा? इसका कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? इसका रास्ता कौन रोकेगा? तो मेरी गुजारिश होगी इस माहौल को, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए आप तालीम दें। Several protests have been staged since the past week when the incident happened, and rights groups have raised concern over repeated attempts by extremist elements to derail development in the illegally occupied region. Locals have urged the government to ensure right to education and to end to patronization of extremists. यहाँ पर स्कूल माजी में भी जलाए गए 2-3 दफा इस तरह के वाक़यात हुए। ये कोई नया वाक़या नहीं है, लेकिन अब के बाद जो तब्दीली यहाँ पे देखने को मिली, लोगों ने एहतजाज किया, मज़ामत की, मुज़ाहिरा किया और दियावर के लोग अब तालीम चाहते हैं, अमन चाहते हैं और यहाँ अपने बच्चों के हाथों में कलम और कापी और बस्ता देना चाहते हैं। अब यहाँ के लोग बदल चुके हैं। हुकूमतों से यही गुजारिश है कि जो स्कूल जलाए गए हैं उसके मुहर्रिकात को सामने लाएं। कुछ मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन असल मुजरिमों तक पहुँचा जाए, जो तालीम दुश्मन है उनको अरेस्ट किया जाए, सजा दी जाए। यहाँ के लोगों का मुतालबा है। In a similar incident in 2018, 12 girls' schools were bombed and burned down in Myanmar, where Taliban-linked terrorists opposed to girls' education are active. Although it has not been confirmed if any terrorist organization was involved in the incident, Pakistani Taliban and allied Islamist terrorist groups regard girls' education as anti-Islam. The beautiful heritage and culture of Jammu and Kashmir are well known throughout the world. In order to revive the centuries-old traditional clay art, an exhibition was organized at the Government Arts Emporium in Srinagar. A variety of handicrafts were on display at the exhibition, organized by the architect Zoya Khan. Take a look.
Jammu and Kashmir has an attractive heritage and culture that is famous all over the world. But with the passage of time, a number of art and craft forms are on the verge of extinction. Recently, an exhibition was organized at the Government Arts Emporium in Srinagar city with the motive of reviving the age-old traditional clay manufacturing art. Organized by an architect named Zoya Khan, a number of different kinds of handicrafts were put on display at the exhibition. Many people, including art lovers and students, visited to see this rare exhibition showcasing the rich heritage and art of Kashmir. मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है जो पूरा एक क्राफ्ट है जो खानियारी टाइल्स हैं, तो दिस इज दी ओनली सर्वाइविंग मास्टर क्राफ्ट्समैन जो ये टाइल्स बनाते हैं। एक टाइम पे कश्मीरी घरों में इनके मोहल्ले पे एक टाइम पे एक दिन में 3000 टाइलें बनती थी, बट ऐसा जी बिल्कुल ट्रेडिशनल ग्लेज टाइल्स, ये मटेरियल क्ले होता है और उसके ऊपर जो फिनिशिंग होती है वो ग्लेज्ड होती है। सो एट अ टाइम ये चीजें बनती थी, इतनी कॉमन एलिमेंट था कश्मीरी घरों का, बट विद टाइम देयर वर न्यूअर मटेरियल्स एंड आप देखेंगे अब मकानों में राजस्थानी मार्बल भी लगा होता है। So this is just an attempt to, by means of taking one example, कि हमारे जो क्राफ्ट थे उसमें क्यों इतना डिस्कनेक्ट आया। ये लोगों के लिए एक सोचने के लिए ये सारी चीजें यहाँ सामने रखें कि हमारा एक अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद ऑल आवर क्राफ्ट्स, हाउ आर वी मेकिंग अ न्यू आइडेंटिटी। Clay tiles have always been considered to be the best material for making houses in weather like Kashmir. However, due to modernization, people have started using other materials like marble and concrete, which has resulted in traditional clay tiles that were an important part of Kashmiri culture losing their glory. With the efforts of the Handicrafts Department, people like Zoya are trying their best to revive the long-gone culture of clay tiles in Kashmir and educate the youth about its culture and heritage. I think as a Kashmiri, each one of us, we are very proud of our inheritance and our culture. Kashmir में आप देखिए जो पुराने घर हैं, आप छोड़ दीजिए फ्रॉम ब्यूटी और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर सो कंफर्टेबल। वुड वर्क है, वग्गू है, मिट्टी का बोर है, ये जो टाइल्स हैं ये तो कश्मीर के वेदर के लिए आइडियल हैं। हम लोग आजकल जो मार्बल वगैरह जो हम लोग बाहर की वो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं बहुत इम्प्रेसिव हमें लगती है, बट आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज कंपेरेबल टू कश्मीरी आर्किटेक्चर। आप पुराने घर देखिए कितने खूबसूरत थे। इस एग्जीबिशन से हमें ये एक जो डाइंग आर्ट है कश्मीर का, क्योंकि जो बहुत सारे क्राफ्ट्समैन है द आर्ट इज डाइंग, तो वो उस पे फोकस हो रहा है। तो द मेन फोकस वाज टू हाईलाइट के द आर्ट इज डाइंग, क्योंकि जो नई जनरेशन्स के लोग हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द क्राफ्ट्समैनशिप। जैसे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन है, खत्मबंद है या कोई भी पर्टिकुलर आर्ट है, पेपर माशी है, कारपेट मेकिंग है, तो उनके जो पर्टिकुलर फ्यूचर जनरेशन्स है दे आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम्स जो उनके पहले के जनरेशन्स कर रहे थे। बेसिकली जो एक क्ले टाइल्स हैं जो हमारी डाउनटाउन में या पहले पुराने ज़माने में कश्मीर में यूज़ होते थे, तो स्लोली ये मॉडर्न इनसे रिप्लेस हो रहा है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न टाइल्स अब कोई यूज़ नहीं करता। If the authorities and artists keep on making such sincere efforts to keep the clay tiling culture continue in the valley, it will also encourage other youngsters to understand and work towards the revival of the culture. Over the years, many efforts have been made by the authorities to revive different cultures by organizing exhibitions and programs in Kashmir. Moving on with proper irrigation and water supplies for agriculture, the lives of farmers in the remote areas of the Rajarani district have improved tremendously. All thanks to the Irrigation Department for constructing new irrigation canals as well as for repairing the old ones. We have a story.
The lives of farmers in the far-flung areas of the Rajarani district are becoming better and happier, thanks to the proper irrigation and water supply for agricultural purposes. 14 irrigation schemes have been introduced to provide proper irrigation facilities to the farmers in the Nowshera sector. According to the people living there, agriculture is the only source of livelihood, and these schemes are all set to benefit them, bringing the best possible outcome. The step has been taken by the Irrigation Department with the dual motive of improving the infrastructure of the far-flung area along with providing proper facilities to the people. भी हमारा यहाँ काम चल रहा है, इरिगेशन स्कीम हमारी एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ठंडा पानी, तो ये कैपेक्स बजट में हमारी कोई 14 स्कीमें चल रही हैं। एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट, वो नौशहरा में भी है, कालाकोट है, सुंदरबनी है, ये हमारा ठंडा पानी ये सुंदरबनी ब्लॉक का पार्ट है, तो इसमें ये हमारा कैपेक्स में काम चल रहा है। कुछ हमने पिछले साल भी किया था और जो इस साल के बजट में हमारा काम ये टेंडर हो गया था, अब लेबर शेबर काम कंट्रैक्टर ने काम शुरू किया हुआ है। Construction of an irrigation canal has been started in Nowshera and Sundarbani, connecting 2 kilometers of villages near the border area. The reconstruction of old canals is also going on in full swing. Farmers who rely solely on agricultural lands for their livelihood are now cultivating paddy and maize. Earlier, farmers used to incur losses due to inadequate water supply. Now, with these development schemes, more and more farmers are getting involved in agriculture. ये ठंडा पानी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, जहाँ पर हमारी काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी कि ये 1986 में ये हमारा हेड और ये नहर बनी थी। उसके बाद नॉर्मल कुछ काम होता रहा, लेकिन आज जहाँ हमारे जो सब डिवीज़न नौशहरा में हमारे एक्शन साहब आए हैं, इनकी बहुत मेहरबानी है हम पर, और ये अब लगातार हमारे पिछले साल से हमारे जहाँ काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में लगभग 2 किलोमीटर तक तो ये हमारा जो डिमांड थी इनके आगे हमने डिमांड रखी थी कि इसकी फुल रिपेयरिंग होनी चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। Authorities are working towards construction of irrigation canal in full swing. The irrigation canal project is all set to irrigate around 5,000 acres of land in Nowshera and Sundarbani. Rupees 85.57 crore has been allocated by the authorities for the construction of new canal as well as the repairing of the old canals. The project is expected to benefit around 6,300 families in the area. The canal will benefit the region's youth by creating jobs while also improving the productivity and wealth of the entire area in addition to irrigating the land. इधर हमारा रोजगार था सर यही सब्जी का। सर पहले तो इधर सारे बंदे लगाते थे सब्जी, सर कई बंदे ने छोड़ दिया सब्जी लगाना, नहर नहीं रिपेयर नहीं थी, पानी की बहुत दिक्कत थी इधर सर, इसीलिए सर पानी इसलिए नहर पूरी रिपेयर 5 किलोमीटर तक रिपेयर हो जाएगी। अच्छा काम हुआ इधर, इरिगेशन ने सही काम किया है, कोई गलत नहीं किया, हमारी कोई भी डिमांड होती है तो पूरी कर देते हैं जी। अच्छा काम किया है सर, हमारा रोजगार यही है, ये लेके सर लगी है गोभी की सब्जी। With the completion of this task, Nowshera and Sundarbani border areas will walk towards the path of development and prosperity. This will also encourage more and more people to become a part of agricultural sector and upgrade their standard of living. The Srinagar Smart City project aspires to leverage its natural and cultural heritage through innovative solutions, enhancing the quality of citizens' lives. With introduction of infrastructural reforms and collaboration of locals, significant progress is being made under the project. Recently, the Srinagar Smart City Limited conducted a stakeholders consultation to discuss the projects for bringing about significant changes in the lives of the locals. Take a look.
Srinagar is slowly developing into a smart city, all thanks to the government's Smart City project, under which a number of projects are transforming the city. In order to get the feedback of the locals on the progress of ongoing projects on the grassroots level, a stakeholder consultation was conducted by the Srinagar Smart City Limited. Organized at the auditorium of Department of Information and Public Relations, Srinagar, the consultation saw participation of people from different walks of life. Discussions were held on how the ongoing smart city projects are transforming the lives of locals in Srinagar, taking the feedback of the locals in consideration. Presentation highlighting the implementation, functioning and expected outcome of different smart city projects was shown to the locals. ये वर्कशॉप आज हमने श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के डिस्कशन और उनके डिलिब्रेशन प्लस फीडबैक पब्लिक फीडबैक के लिए रखा था आज जो है DIPR के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के इस ऑडिटोरियम में। बेसिक आइडिया ये था कि अगेन वी आर डूइंग दिस वर्कशॉप्स टाइम एंड अगेन टाइमली कि लोगों तक जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शहरी हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे जो है ट्रेड फ्रेटर्निटी के लोग हैं या हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, इन सबको हम वापस इस स्टेज पे बता पाएँ व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्मार्ट सिटी, या हमें अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई फीडबैक है, कुछ चीज़ें, हाउ डू वी टेक दैट। सो उस सब के बारे में आज जो है दिस होल प्रोग्राम वाज कंडक्टेड। इसमें वी गिव अ डिटेल प्रेजेंटेशन अबाउट ऑल द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग टेकन अप बाय द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसको किस तरीके से हाउ दे हैव बीन इंटीग्रेटेड, व्हाट वुड बी देयर आउटकम, व्हाट वुड बी देयर इम्पैक्ट। The consultation also aimed at removing all misconceptions and providing transparency to the locals regarding the functioning and impact of government projects. The presentation included info on different smart city projects on riverfront development, redevelopment of main central business areas like Lal Chowk, pedestrianizing of the city, and development of Srinagar city as a budding tourist destination. Audience was also educated about the My Srinagar portal, which is a one spot for getting information about projects and schemes. Locals appreciated the efforts of the authorities. पब्लिक के लिए वे क्रिएटिंग वन माई श्रीनगर पोर्टल, जो जिसमें सिटीजन सभी डिपार्टमेंट्स की, सभी जो भी हैं विंग्स की, नॉट कन्फाइंड टू SMC, नॉट कन्फाइंड टू एनी वन डिपार्टमेंट, बट सबकी सर्विसेज उसमें इंटीग्रेटेड हो। दैट बिकम्स काइंड ऑफ जैसे अमेजॉन से हम खरीदारी करते हैं या अमेजॉन से हम शॉपिंग करते हैं, इसी तरीके से इस माई श्रीनगर ऐप से लोग अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, किसी को ऑफिस के चक्कर करने नहीं पड़े, ये चीज़ें। देन हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, या हमारे वाटर सप्लाई के लिए SCADA सिस्टम, या हमारे जो सीवरेज के या ड्रेनेज के जो हमारे पंपिंग स्टेशन की कंट्रोलिंग के लिए सिस्टम, दे आर बीइंग एडेड एंड इंटीग्रेटेड विद दिस ब्रॉडर बैकबोन। एक तो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी में बोथ डायरेक्टली एंड विद कन्वर्जेंस अलग से भी स्टैंड अलोन पार्किंग्स डेवलप किए। फॉर एग्जांपल जस्ट आउटसाइड SBI का जो है, या जो रेजिडेंसी रोड पे वी हैव क्रिएटेड वन सरफेस पार्किंग। फिर अमृत के साथ कन्वर्जेंस में वी हैव क्रिएटेड 2 मल्टी लेवल पार्किंग्स, जो है एक शेख बाग में है, दूसरा जस्ट अपोजिट दी जो अमर सिंह जो पार्क है हमारी प्रताप पार्क के अपोजिट जो बनाई है। Actually, before like came here, I did not know what actually the government, the smart city I have seen they are doing. By coming here, I have learned the many things like the road transportation planning, like construction planning. Everything I came to know in a broad spectrum. आपको लगता है कि ऐसे workshops होने चाहिए? Yeah. There should be the many more the workshops in the not only in the Srinagar city but
in the whole district, in every district, that everyone need to be know about all these things. Not only the Srinagar, अब हम बोलेंगे कि नहीं कि Srinagar city को ही ये smart बनाना है, but it should be the every city, there should be the every part, like every city should be need to be taken into consideration, like in Baramulla, Anantnag. It is through initiatives like these that Jammu and Kashmir is turning into a better, smart and a beautiful territory, which has resulted in record footfall of tourists in the territory this year. Well, set amidst the premises of the majestic Rajarani temple in Bhubaneswar, the Rajarani Music Festival is one of the most well-known Indian classical music festivals in the country. Recently, the third edition of the festival was held in its full glory, which witnessed a spate of melodious musical numbers. A symphony of captivating Indian classical music was performed by renowned artists of national and international standing. Take a look. Bhubaneswar is a city that is full of culture, be it architecture, performing arts, handicrafts or any other form. The city boasts of a rich history of art and tradition. Out of a plethora of cultural festivals that are organized in the city throughout the year, the name of the Rajarani Music Festival holds a special mention. Recently, the 19th edition of the festival was held, where famed musicians of national and international levels repute performed a symphony of entrancing Indian classical music. Organized by the government of Odisha in association with Odisha Sangeeta Natak Academy, this event is a distinctive portrayal of classical music and its musicians. The 3-day annual festival is organized in the magnificent Rajarani temple premises, which dates back to the 11th century AD. Adding to the musical fervor, the temple was beautifully decorated with lights, serving as a perfect aesthetic to the melodious atmosphere. Rajarani Music Festival is one of the premier musical shows in the country, which has been performed since 2003, and music lovers all over the country look for this occasion, and also nationally and globally it is acclaimed as a music festival. And since it is working since 2003, very senior artists all over the country, they have already participated in this show, and it has an importance of its own. Today we had flute recital by Pandit Jawahar Misra. He hails from Odisha, and Madam Ashwini Bhide, who is a vocalist, Hindustani vocalist, she is from Maharashtra. The festival serves as a showcase for classical Indian music, including vocal styles such as Hindustani, Carnatic and Odissi, which are native to the state of Odisha, as well as sonorous instruments that are only found in India. The festival consistently supports and provides a stage for our musical legacy to enthrall the audience. Out of all the performances, the performance by Maestro Jawahar Mishra, who played the Hindustani flute, and Vidushi Ashwini Bhide Deshpande, a well-regarded Hindustani vocalist, garnered special praise. हमारा जो शास्त्रीय संगीत है ये भी कुछ 2000 सालों से चलता आ रहा है. मैं ये नहीं कहूँगी कि 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी का है, लेकिन और ख्याल पिछले कम से कम 400-500 सालों से हम लोग गा रहे हैं. मैंने जो आज अभंग गाया वो संत ज्ञानेश्वर का था, वो भी 12th सेंचुरी के पोएट थे. और मेरे महाराष्ट्र में ये परंपरा भी है कि संत कवियों के गीत गाए जाते हैं. आज 800 साल से ये परंपरा 12th सेंचुरी से चलती आ रही है, और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इससे जुड़ने का मुझे मौका मिलता है. The
The artists captivated the viewers with their classical, melodious and beautiful performances as they tapped their feet to the strokes of the accompanying music instruments. Many dignitaries graced the occasion, making it a successful event, including coordinators from the Sangeeta Natak Academy and the Department of Odia Language, Literature and Culture. Audiences from not only India but also from other parts of the world who have a passion for music came to see these mystical performances. We are enjoying a lot this wonderful opportunity to watch this beauty all around, and also the artists are really amazing. It's like a dream, you know, it's absolutely beautiful, yes. We are enjoying a lot. It's the first time I'm here in Rajarani festival and really enjoying the artists, the quality of the music that we have the opportunity to witness today is amazing. The entire setup, it's amazing, it's a different mood, and the temple at night, it has like a mystic feeling. The Rajarani festival is one among a number of successful steps taken by the government of Odisha to attract tourism to the state and spread awareness about its culture and heritage at various national and international platforms. Well, that's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.